Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. FFB Live Chemistry classes में आजकल केमिकल बॉन्डिंग इस चैप्टर पे स्टडी चल रही है तुम लोगों की। इससे पहले के 3-4 क्लासेस हो चुके हैं जिसमें लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल एंड लुइस फार्मूला फॉर द मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। आज के क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड फॉर्मल चार्ज पे डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रेजोनेंस पे डिस्कस होगा कि इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है इन केस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम formal charge. What do you know about formal charge? This is an important topic in chemical bonding. Often it is possible to write two different Lewis structure for a molecule differing in the arrangement of atoms. For example, a molecule A to B can be written as AAB or ABA. Sometimes both structures represent real compounds that are isomers of each other. More often, only one structure exists in nature. For example, methyl alcohol has the structure COH इस तरह से. In contrast, the structure इस तरह से भी होती है CO. ये CO जो है सिंगल बॉन्ड से है, दोनों के पास लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. 2H इससे और 2H इस तरह से यहाँ पे जुड़े हुए हैं. Does not correspond to any real compounds even though it obeys the octet rule. Methyl alcohol has the structure both does not correspond to any real compound even though it obeys the octet rule. There are several ways to choose the more plausible of to a structure. The one way involves a concept called formal charge, which can be applied to any atom within a Lewis structure. Now, definition of formal charge. The formal charge for the atom in a molecule or ion is the charge calculated for that atom based on the Lewis structure of the molecule or ion using the equation. The formal charge of the atom in the molecule or ion is equal to number of valence electron in free atom minus number of lone pair electrons, that is non-bonding electrons, plus half number of bonding electrons. This is the formula for the calculation of formal charge of atom in the molecule or ion. Our formal charge is equal to CF is equal to x minus y plus z upon 2, where x is equal to number of valence electron in the free atom, y number of unshared electrons owned by the atom, z number of bonding electrons. The factor half divide the bonding electrons equally between the atoms linked by the bond. Ordinarily, the more likely Lewis structure is one in which the formal charge are close to zero as possible. Any negative formal charge is located on the most strongly electronegative atoms. Calculating the formal charge of various atoms in structure first and second in alcohol and applying the above rules to decide which structure is preferred for methyl alcohol as follows.
for this x is equal to 4 and y is equal to 0, z is equal to 8, then CF is equal to 0. And for x is equal to, for this x is equal to 4 and y is equal to 2 and z is equal to 6, CF हो जाएगा -1. For oxygen x, ये किसके किसके लिए था? For कार्बन दोनों स्ट्रक्चर में. Now for oxygen x is equal to 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, y is equal to 4, z is equal to 4, तो CF is equal to 0. For ऑक्सीजन सेकंड केस में ऑक्सीजन के लिए CF हो जाएगा +1 वैल्यूज रखने पे. एवरी H dotted x is equal to 1 for the H. Every H, x is equal to 1, y is equal to 0, z is equal to 2. Then CF is equal to 0. For this structure, second structure के लिए H के लिए x is equal to every H, सारे कई H है, is equal to 1, y 0, z 2, CF is equal to 0. Now in structure first, carbon, oxygen and atoms have formal charge of 0. In structure second, a negative charge is assigned to carbon and a positive charge is assigned to oxygen, which is very unlikely because carbon is less electronegative than oxygen. Hence, structure first for the methyl alcohol is preferred over structure second. Now the sum of formal charges. The sum of the formal charges of atom in a molecule or in an always equal to its net charge. The following example, a hydroxide ion. इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, माइनस चार्ज है. CF for oxygen atom 6 plus 2 upon 2 is equal to -half. Now CF for hydrogen atom 1 minus 0, 2 upon 2, 0. Sum is -1. Net charge on ion is equal to -1. So see again the definition. The sum of the formal charges of the atom in a molecule or ion always equal to its net charge. That is sum of the formal charges on atom is equal to net charge on the ion. वही चीज है. अमोनियम आयन C स्ट्रक्चर इस तरह से अमोनियम आयन का होता है. अब CF फॉर नाइट्रोजन एटम 5 minus 0 plus 8 upon 2 plus 1 हो जाएगा. CF for every hydrogen atom this. Now sum हो जाएगा +1. Net charge on the ion +1. That is sum of the formal charge on atom is equal to net charge on the ion. तो net charge कितना है? +1. Now ozone molecule CF for O1. This is the one ozone, second ozone, third ozone. 6 minus 2 plus 6 upon 2 plus 1. CF for O second O के लिए 0 and for third it is a -1. CF for O3 6 minus 6 plus 2 by 2 equal to half. Sum कितना हो जाएगा? Sum is 0. That is, there is no charge on molecule, but the formal charges on the oxygen atom in the Lewis structure can be written as the real value of formal charge calculation comes from their application to resonance structure. Too often happens that the two or more resonance structure of a given substance are not identical. One of the structure may be better than the other, meaning that it approximates the actual electronic structure of the substance more closely. Now considering the example of nitrous oxide N2O molecule, two resonance structures are N triple bond N, यहाँ प्लस और ये माइनस चार्ज है, और ये इस तरह से भी हो सकता है. दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसकी. अब दोनों के लिए अलग अलग हर एटम के लिए CF on oxygen atom -1 पहला जो ये ऑक्सीजन एटम है. CF on central N atom +1, CF on terminal N atom 0, और दूसरी तरफ CF on terminal N atom -1, यहाँ +1 यहाँ 0, दोनों में बराबर है.
Since oxygen is a more electronegative element than nitrogen, the structure first is more favorable resonance structure for Hn2O. The formal charge actually do not indicate the real charge separation within the molecule, but only helps in keeping track of the valence electron. Formal charges are helpful in deciding the most suitable structure of the molecule. Now for the example, some examples. Write Lewis dot structure of the following: CO, HCN, NO2. CO, step first the skeleton is CO. Step 2, A is equal to 1 into 4. पहले सारी चीजें पढ़ चुके हैं. For C is equal to 1 into 6. For O is equal to. So now number of electron is 10. Step 3, N is equal to 1 into 8 for C and 1 into 8 for O is equal to 16 electron. Step 4 में क्या हो जाएगा? S is equal to N minus A. लास्ट क्लास में ये सारी चीज बताई हैं. 16 minus 10 is equal to 6 shared electron. स्टेप 5 C ट्रिपल बॉन्ड C का, और स्टेप 6 में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, या इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड O. फॉर द सेकंड केस, सेकंड क्या है? HCN है, फिर NO2 है. Step first skeleton is HCN. Step 2, A is equal to 1:1 for H and 1:4 for C. Plus 1 plus 5 is equal to 10 electrons. Step third, N is equal to 1 into 2 for H, 1 into 8 for C, 1 is plus 1 into 8 is equal to 18 electrons. In step fourth, like this 8 electrons. Step 5 हो जाएगा. स्ट्रक्चर इस तरह से लिख सकते हैं. स्टेप 6 में इस तरह से, और फाइनल स्ट्रक्चर इस तरह से. इसी तरह से फाइनल स्ट्रक्चर आ जाएगा ये. अब NO2 नाइट्राइट आयन के लिए स्केलेटन स्ट्रक्चर ये होगा. अब इस A निकालेंगे, N निकालेंगे, S निकालेंगे, O, तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या आएगा? O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, या O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, उस पे माइनस चार्ज होगा. नाउ राइट लुईस स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. NH2CONH2, नाइट्रोजन क्लोराइड NCl3, टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन BF4 माइनस, कार्बोनेट आयन. तो ये सारी चीजें पिछला क्वेश्चन, अगर पिछले 2 लेक्चर ध्यान से देखे होंगे तब ये समझ में आएगा. तो अगर नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो. पहला क्या है? NH2CONH2, that is U. यहाँ A is equal to 24, N is equal to 40, S 40 minus 20, 16 इलेक्ट्रॉन. पॉसिबल स्ट्रक्चर ये होगा, या पॉसिबल क्या, बल्कि स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होगा और फाइनल स्ट्रक्चर इस तरह से. फॉर सेकेंड केस A is equal to 26, NCl3 के लिए है, N is equal to 32, S is equal to 6. तो स्ट्रक्चर ये हो जाएगा. थर्ड BF4 बोरान टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन. A is equal to 32, N is equal to 40, S is equal to 8. जो मेथड पहले था उसी से निकाला जाएगा. तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा. अब उसके बाद है कार्बोनेट आयन के लिए A is equal to 24, N 32, S 8 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से हो जाएगा. What is the formal charge on various atoms? Nitrogen ion, carbonate ion. The Lewis structure of nitrite ion इस तरह होता है. CF for nitrogen atom 5 होता है. 5 minus 2 यहाँ पे बच रहा है, minus half into 6 ऑक्सीजन के पास is equal to 0. CF for nitrogen atom हो गया. CF for double bond O atom हो जाएगा 6 minus 4 minus half into 4 is equal to 0. Now C for single bonded O atom 6 minus half into 2. Now Lewis structure of carbonate ion is this. CF for C atom 4 minus 0 minus half into 8. CF for double bonded O atom 6 minus 4 minus half into 4 is equal. C for each single bonded O atom 6 minus 6 minus half into 2.
शायद कट जा रहा है थोड़ा थोड़ा जो है, तो इसको फिर से एक बार देखो, कोई चीज कटी तो नहीं, नहीं और किसी में नहीं। Which Lewis structure for the molecule COCl2 is correct on the basis of formal charge? दो possible structure इसकी हो सकती है। अब सबके लिए CF, C for C atom, CF for O atom, CL for CF for CL, फॉर्मल चार्ज इतना इतना आया तीनों पे। सेकेंड स्ट्रक्चर के लिए CF on CL एटम, और बीच का कहाँ गया, हाँ ये है COCl के लिए हो गया। उसके बाद है CF और CL एटम। नाउ इन स्ट्रक्चर सेकंड, CF और CF एटम -2, CF on O एटम +2, CF on each CL एटम 0। स्ट्रक्चर थर्ड भी पॉसिबल था, इसके लिए 0 0 0। The structure third with forward charges of 0 is the most correct Lewis structure of COCl2. Structure third is this. This is the real structure. Now come on the most important topic of the chapter is hydrogen bonding. In 1920, Latimer and Rodenbush introduced the idea of hydrogen bond or to explain the nature of its association in liquid state of substance like water, hydrogen, fluoride, ammonia, formic acid, etc. In a hydrogen compound, when a hydrogen is bonded to highly electronegative atoms such as FON by a covalent bond, the electron pair is attracted toward electronegative atom so strongly that a dipole result, that is one end carries a positive charge and other end carries a negative charge like this. इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। If a number of such molecules are brought nearer to each other, the positive end of the one molecule and the negative end of the other molecule will attract each other and weak electrostatic force will develop. Thus, these molecules will associate together to form a cluster of molecules. तो ये different molecules हैं एक ही substance के, एक साथ जब वो होंगे तो एक का जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट है और दूसरे मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट एक दूसरे से अट्रैक्शन में आ जाता है और एक ये बॉन्ड बनाता है, जिससे ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं। इसको 3 डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। The attractive force that binds hydrogen atom of one molecule with electronegative atom of the other molecules of the same or different substance is known as hydrogen bond. This bond is represented by 3 dotted lines. Hydrogen bonding is of 2 types. First, intermolecular hydrogen bonding. This type of bonding results between the positive and negative end of different molecule of the same or different substance. तो different molecules में होता है ये एक ही substance के, जैसे कि HF इस तरह से आपस में स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि एक FH है ये मॉलिक्यूल, दूसरा जो है ये है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एंगल इसके पीस 120 डिग्री का होता है। इन अमोनिया, this is one ammonia molecule and this is other ammonia molecule. A hydrogen atom of this ammonia with the nitrogen atom of this ammonia bond attracted each other because this has positive end and this has negative end.
तो दोनों के बीच अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। इसी तरह वाटर में होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डिफरेंट मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़े हुए हैं। इसी तरह फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड का ये एक मॉलिक्यूल है जो दूसरे फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल से इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और दोनों वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हैं। अब इसका दूसरा और एग्जांपल है पैराक्लोरोफिनॉल। दिस इज द पैराक्लोरोफिनॉल। एक हो गया इस तरह से, दिस इज दी पैराक्लोरोफिनॉल और ये दूसरा पैराक्लोरोफिनॉल है। तो इसका हाइड्रोजन इसके क्लोरीन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और आपस में जुड़ रहा है। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड एंड आल्सो इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। यानी एक अलग से बॉन्ड डेवलप हो जाता है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी इसको अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। Now this type of hydrogen bonding increase the boiling point of the compound and also its solubility in water. The increase in boiling point is due to association of several molecules of the compound. Second type of hydrogen bonding is intramolecular hydrogen bonding. This type of bonding results between hydrogen and an electronegative element both present in the same molecule. This type of bonding is generally present in organic compounds. Examples are orthochlorophenol, orthonitrophenol, orthohydroxybenzoic acid. तो इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें, एक ही मॉलिक्यूल में जो दो मॉलिक्यूल आपस में किसी बॉन्ड से नहीं जुड़े होते, वो अगर इस तरह की सिचुएशन है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल में इस तरह से बना हुआ बॉन्ड क्या कहलाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तीनों का एग्जांपल है ये है आर्थोक्लोरोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड आर्थोबेंजोइक एसिड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कहाँ है, ये मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल यहाँ पे। This type of bonding decrease the boiling point of the compound. The solubility of the compound also decreases. Now, nature and importance of hydrogen bond. Hydrogen bond is merely an electrostatic force rather than a chemical bond. Hydrogen bond never involves more than two atoms. Bond energy of hydrogen bond is in the range of 3 to 10 kilocalorie per mole, that is 10 to 40 kilojoule per mole, that is about 1/10 of the energy of a covalent bond. Strength 50 to 100 kilocalorie per mole. With the increase of electronegativity and decrease in size of the atom to which hydrogen is covalently linked, the strength of the hydrogen bond increases. So increase of electronegativity and decrease in the size of the atom to which hydrogen is covalently linked, the strength of the hydrogen bond increases. It is evident from the energies of hydrogen bond in the three atoms. यहाँ size of atom कम है and electronegativity ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF के मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रांग होगी HO के मुकाबले में, और उसी तरह से इसकी जो है स्ट्रेंथ सही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ का। नाउ ऑल द थ्री एटम्स इन H bonded X lie in the straight line. Without hydrogen bonding, water would have existed as a gas like hydrogen sulfide. In that case, no life would have been possible on this earth. Hydrogen bonding exists in molecule of living organism.
It exists in various tissues, blood, skin, bones, etc. The cotton, silk, or synthetic fibers possess rigidity and tensile strength due to hydrogen bonding. The stickiness of glue or honey is also due to hydrogen bonding. Thus, hydrogen bonding has great importance in everyday life. Consequence of hydrogen bonding. Hydrogen bonding affects a number of properties of the compound. Some of properties are here. Dissociation. When hydrofluoric acid is dissolved in water, it dissociates to give difluoride HF2 minus instead of F plus, F minus or fluoride ion. 2F like this, H plus, and it dissociates into H plus and HF2 minus. This abnormal behavior is due to hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्ड से दो HF मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और इस तरह से ये HF2 माइनस आयन बनाते हैं, लाइक दिस, इस तरह से F bonded with H and F minus 1. The abnormal property of hydrofluoric acid. Abnormal property of hydrofluoric acid is responsible for the existence of KHF2. Similar compounds KHCl2, KHBr2 do not exist due to absence of hydrogen bonding in HCl and HBr. Now, association. Due to intermolecular hydrogen bonding, two or more molecules of a compound exist as associated molecules. The molecules of carboxylic acid exist as dimer. The molecular mass of carboxylic acid are found to be double. For example, the molecular mass of the acetic acid is found to be 120. The association also affects the strength of acid. Now, high melting and boiling points. The compounds containing hydrogen bonds possess high melting and boiling points. High boiling and melting points of the NH3, H2O and HF in comparison to hydrides of 15, 16 and 17 group, to which NO and F belong respectively, are due to hydrogen bonding. H2O exists in liquid state under ordinary condition, while H2S in a gaseous state. As hydrogen bonding exists in water and there are no hydrogen bonds in H2S. Ethyl alcohol has higher boiling point than diethyl ether because there is hydrogen bonding in ethyl alcohol and not in ether. Now, melting and boiling points of the hydrides of 15, 16 and 17 group elements. हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट्स है NH3 का इतना है, उसके बाद PH3, उसके बाद ASH3 और उसके बाद है HBS3. तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इस तरह से है, यानी 195 फिर 138, फिर यहाँ पे ये बढ़ गया, फिर ये भी बढ़ा. इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट NH3 का 239, PH3 का 185, उसके बाद डिक्रीज करने के बाद ये बढ़ जाता है ASH3 का 218 एंड 256 SBH3 का. नाउ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स, मेल्टिंग पॉइंट इनका ये है, H2O का है 273 मेल्टिंग पॉइंट है ये, और बॉइलिंग पॉइंट है 373. H2S का मेल्टिंग पॉइंट कम है H2O से, और इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम है. H2SE का ज्यादा है और इसका H2S से इन दोनों का ज्यादा हो जाता है. अब ग्रुप्स ऑफ 17 ग्रुप. हाइड्राइड HF का है 180 मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 292, जबकि HCl का घट जाता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, 161 और 189. HBr का इससे ज्यादा है और HI का भी. Now, solubility. A substance is said to be insoluble in water if it does not form hydrogen bond with water. Organic compounds like alkanes, ethers, etc. are insoluble in water
as they do not form hydrogen bonding with water, while alcohols and acids are soluble because they readily form hydrogen bond with water. Now, unique properties of ice. Density of ice is less than water, and water contracts when heated between 0 degrees centigrade and 4 degrees centigrade. Now, density of water is maximum at 4 degrees centigrade. These two unique properties are on account of open cage structure of ice due to hydrogen bonding. Each water molecule is linked tetrahedrally to 4 water molecules. Thus, the molecules are not so closely packed as they are in liquid state. When the melting of ice occurs, the cage-like structure is lost and the molecules comes nearer to each other. Due to this, volume of the same mass of water decreases and density increases. Therefore, the density of ice is less than that of water. इस तरह का स्ट्रक्चर आइस का होता है और जब टेम्परेचर बढ़ता है पहले तो ये आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर टूटने लगता है और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं. On heating of ice, the cage structure collapses and this continues up to 4 degrees centigrade. At this temperature, a volume becomes minimum for the definite mass and density becomes maximum. Now, high viscosity, low volatility, high heat of vaporization, etc. of certain substance are due to hydrogen bonding. Due to hydrogen bonding, viscosity high होती है, volatility low होती है, and heat of vaporization high होती है. The glycerol is more viscous due to presence of 3 OH group which can form a number of hydrogen bonds as per molecule. The molecules which are capable of forming associated molecules through hydrogen bonding have naturally low volatility, high heat of vaporization, etc. Now, strength of certain acids and bases. It can be explained on the basis of hydrogen bonding. For example, salicylic acid is a stronger acid than its meta and para isomers. And this is due to the fact that salicylic acid easily furnishes H plus ion as the salicylic ion is stabilized by intermolecular hydrogen bonding. Such stabilization is not possible in meta and para isomers. Similarly, it can be explained that the maleic acid is a stronger acid than fumaric acid. तो salicylic acid है ये H plus ion देता है salicylic और this is the salicylate ion. Now come on resonance. It is generally observed that a single valence bond structure of a molecule cannot correctly account for the properties of the molecule. In such cases, the concept of resonance is introduced. According to this concept, if 2 or more alternate valence bond structure can be written for a molecule, the actual structure is said to be a resonance or mesomeric hybrid of all these alternate structure. For example, carbon dioxide molecule can be represented by the following 3 structure. First, second, this is third. The calculated value of bond distance between carbon and oxygen in C double bond O and C triple bond O are 1.22 angstrom and 1.10 angstrom respectively. But the observed bond distance between carbon and oxygen in carbon dioxide is 1.15 angstrom. Thus, none of the above structure correctly explain the observed bond length. It is thus said that a hybrid form of these structure can provide the exact explanation.
The various structure of which the molecule is a resonance hybrid are known as canonical forms or mesomeric form. These are known as canonical form of the carbon dioxide. Actually, resonance hybrid does not oscillate between the canonical forms of a mixture of these forms, but it is a definite form and has a definite structure which cannot be written on paper. Now, rule for selecting canonical forms or mesomeric forms. First, the relative position of all the atoms in each of the canonical form must be the same. They should differ only in the position of electrons. The number of unpaired and paired electrons in each of the canonical forms must be same. The contributing structure should not differ much in energy. The contributing structure should be such that negative charge residue on more electronegative and positive charge on the electropositive. Like charges should not reside on atom close together in the canonical forms. Formal charges on the atom in the molecule help us in choosing the most appropriate resonance structure. For example, nitrous oxide molecule is represented by two resonance electron dot structure, one of which has a negative formal charge on the oxygen atom and the other has a negative charge on the terminal nitrogen atom. इस तरह से यहाँ पे इस पे है n minus n plus है यहाँ n plus minus. Since oxygen is a more electronegative element than nitrogen, the structure that places a negative formal charge on oxygen is probably lower energy than the structure that has a negative formal charge on nitrogen. Thus, the actual structure of N2 is N, ये वाली होगी N, N plus, NO minus. Now, as a result of resonance, the bond order changes in many molecular ions. The total number of bonds between two. No. As a result of resonance, the bond order change in molecules or ion. Bond order is equal to total number of bonds between two atoms in all the structure upon total number of resonating structure. For example, टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये और बेंजीन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल स्ट्रक्चर. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज इक्वल टू 2 + 1 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2. तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5. इसी तरह ये दूसरा स्ट्रक्चर है बॉन्ड ऑर्डर. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 2 1 + 1 हो जाएगा अपॉन 3 है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, तो हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.33. Many misconceptions are associated with resonance and the same need to be dispelled. It should always be kept in mind that the canonical forms have no real existence. The molecule does not exist for certain fraction of time in one canonical form and for other fraction of time in other canonical form. There is no equilibrium between the various canonical forms, or the molecule is not a mixture of various forms. The molecule as such has a single definite structure which cannot be depicted by a Lewis structure. Now, resonance energy. It has been observed that a molecule which shows resonance has greater heat of formation than the calculated heat of formation of any one of the canonical forms. The difference is represented by delta E and is called resonance energy. Resonance energy is equal to experimental value of heat of formation minus calculated value of heat of formation of most of the stable
canonical forms. इस तरह का निशान इसलिए कि जो इसमें से ज्यादा होगी उसे हम डिवाइड माइनस कर देंगे. On account of delta E resonance energy, the hybrid form is more stable than any. On account of delta E, the hybrid form is more stable than any of the canonical forms. Now, resonance energy is also defined as the difference between the actual bond energy of the molecule and that of the most stable of the resonating structure. Now, resonance energy is equal to actual bond energy minus energy of the most stable resonant structure. This is the formula. Canonical forms फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट की एनर्जी कम है, उसके बाद सेकंड थर्ड, ये पूरा डायग्राम यहाँ पे है. इसका कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंट हाइब्रिड के बीच जो रेजोनेंस एनर्जी है वो एक्चुअल एनर्जी और जो ऑब्जर्व्ड एनर्जी है उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी. पूरा डायग्राम ये है, रेजोनेंट हाइब्रिड एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड की, और ये है एक्चुअल. इनका डिफरेंस क्या कहलाता है, ये बीच की पोजीशन की एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी. More the resonance energy, more stable will be the molecule in comparison to canonical forms. Now, characteristic features of resonance hybrid. The resonance hybrid is more stable than any one of the canonical forms. That is, it has a less energy. In a resonance hybrid, the bond lengths are different from those in the canonical forms. The bond length in a molecule become equal. For example, the carbon-carbon bond length in benzene is 1.39 angstrom as against 1.54 angstrom per carbon-carbon single bond and 1.34 angstrom for carbon-carbon double bond. The canonical forms do not have any real existence. They are only imaginary. The resonance hybrid has only real existence. Now, some examples showing resonance. Nitric oxide has a 2 canonical form. Nitrogen dioxide has a 1, 2, 3, 4 canonical form. These are the resonance structure. Carbonate ion exists in 3 canonical forms. Ozone exists in 2 canonical forms. Benzene molecule exists as 5 canonical forms. SO2 molecule exists in 2 canonical forms. Structures सामने है. Bonding सारी समझ चुके हो किस तरह से क्या bond बन रहे हैं. SO3 molecule represent 3 canonical forms. Nitrate ion represent 3 canonical forms. नोट करने के लिए स्लो चला रहे हैं, नोट कर सकते हो. नाइट्रेट आयन 3 कैनोनिकल फॉर्म है इसकी. ये सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यानी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो करते हैं. नाउ सम एग्जांपल. अमोनिया इज ए सॉल्युबल इन वाटर बट फॉस्फीन इज नॉट. Ammonia is soluble in water as it forms hydrogen bonding with water molecules while phosphine does not. NH3 is a polar covalent compound. Ammonia is a polar covalent compound. Due to difference in electronegativity of nitrogen and hydrogen, while PH3 is covalent compound as both P and H have nearly same electronegativity. The polarity of NH3 is responsible for hydrogen bonding. This is the answer. Now, which is expected to have the highest melting point? CH3 thrice N, PH3, NH3 explain. Now solution. Trimethylamine cannot form a hydrogen bond because no hydrogen atom is directly linked with nitrogen. Nitrogen is more electronegative than phosphorus. Intermolecular hydrogen bonding is present in NH3 and there is no hydrogen bonding in PH3. Hence, PH3 is expected to have a
highest melting point. Hence, NH3 is expected to have highest melting point due to presence of hydrogen bonding. Give reason for the following. Sucrose is a covalent compound, but it is quite soluble in water. Orthonitrophenol has lower boiling point than paranitrophenol, and hydrogen bonding does not exist in HCl, though chlorine is quite electronegative. Solution. First, the molecule of sucrose contains many OH groups and hence is capable of forming hydrogen bond with water. Orthonitrophenol has higher boiling point due to intermolecular hydrogen bonding. And third point, this is due to large size of chlorine atom. Fluorine का size कम होता है, chlorine की ज़्यादा होती है. Now, which of the following substance exhibit hydrogen bonding? Draw the hydrogen bond between two molecules of a substance where appropriate. Methyl alcohol है ये. This is acetone, and this is acid. This is CH3CO NH2. Solution. First, third. First is alcohol. उसके बाद थर्ड है एसिड एंड फोर्थ है एमीन कार्बन एक कार्बामाइड एमाइड है ये CONH2. Both these 1/3 and 4th molecule exhibit hydrogen bonding like this. First, this is the alcohol, this is the acid and this is the amide. और बाकी में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए ड्रा द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस. जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको हमें शो करना है यहाँ पे. तो इन दोनों में इस तरह से, तीनों में बल्कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से प्रेजेंट होती है. ओके, दिस एंड दिस एंड दिस. तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रेजोनेंस, इस पे आज का क्लास कंप्लीट हुआ. तीनों ही चीज इम्पोर्टेंट हैं, जानना जरूरी है. तो इसको आप लोग पढ़ेंगे और नोट करेंगे. जो चीज जो है नोट करना जरूरी हो, जैसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, शुरू पे जो मेथड बताया पहले उसको नोट करो. उसके बाद जो उसका सॉल्यूशन बताते गए उसको नोट करो. सारी चीजें नोट करके उसके बाद उसको देखो कि कैसे हो रहा है. उसको खुद कैलकुलेट करके निकालना है कि कैसे वैल्यू इतनी आ रही है.